today we are going to start with Article 20, 21 and 22. ठीक है? So पहले let's start with the Bare Act and try to understand what exactly does these articles deal with, and then we'll proceed to the other theory part of it. Okay, so we have seen that Article 19 basically grants some basic fundamental freedoms to all citizens. ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 20 पे, जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू कोरिलेट दिस विथ your criminal laws. Okay, so Article 20 and Article 22 have to be read and they have to be understood in light of what the criminal law of the country is. ठीक है, because Article 20 और 22 का जो protection है, that is available against criminal offenses only. ठीक है, तो 20 as well as 22 they do not apply in civil cases, they only apply in criminal offenses. ठीक है, तो Article 20 बोलता है it basically guarantees you three kinds of protection. Okay, first protection is with respect to what kind of laws will be applicable to you. Okay, so it basically talks about the concept of ex post facto laws. Second protection, that is 20 clause 2, talks about how if you've been prosecuted and punished once, then you cannot be prosecuted and punished for the same offense twice. Okay, so it is basically a protection that you will not be jeopardized twice for the same thing. Third protection, that is 20 clause 3, this talks about the principle of self-incrimination. Okay, that you cannot be forced to give evidence against yourself. Okay, so Article 20 is basically very easy if you just are familiar with the Bare Act of it, or thoda sa or nuanced understanding of what do these things mean, then there isn't much in Article 20 to actually worry about. So first let's start with 20 clause 1. ठीक है, again प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो जनरली ऑल पर्संस को अवेलेबल होते हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता, इफ यू स्टिल फॉरगेट दैट हु डज दिस आर्टिकल अप्लाई टू, देन इट अप्लाइज टू ऑल पर्संस. ठीक है, तो हर फंडामेंटल राइट का आपको पता होना चाहिए कि हु कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ इट. ओके, so for example Article 19 was only available to the citizens of India, right, but Article 20 is available to all persons. ठीक है, यहाँ पे persons include artificial persons also. ठीक है, तो for example if we are talking about, let's say, a company, a corporation, then that corporation can also seek the benefit of Article 20. Now let's come to 20 clause 1. 20 clause 1 अच्छे से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है no person shall be convicted of any offense except for a violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. Okay, तो see, बहुत basic सा principle है. वो बोलता है कि at the time of commission, ठीक है, at the time of commission of the act is what the cut-off point will be. ठीक है, जब offense हुआ है या फिर जब वो act हुआ है जिसको हम offense बोल रहे हैं, उस पे क्या अप्लाई होगा. ठीक है, तो first of all at the time that act should be an offense. ठीक है, तो पहला तो ये है कि nobody can be convicted of any offense except for a violation of a law in force at the time of the commission charged as an offense, nor be subject to a greater penalty than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक्ट हुआ है तब वो ऑफेंस होना चाहिए अंडर एनी लॉ. ओके, इफ अंडर एनी लॉ that act is not an offense, but later on by amendment or by enactment of a new law that particular act is made an offense. ठीक है, तो आप उसके लिए punishable नहीं हो सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि basically when you have committed that act, at that point in time what is the law that will determine your liability. ठीक है, retrospectively आपके ऊपर liability impose नहीं हो सकती है. Okay, so 20 clause 1 basically grants you that basic protection कि
जो क्रिमिनल लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ये ब्लैंकेट बैन नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल लॉ किसी भी केस में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता है, इट कैन अप्लाई एंड वी विल आल्सो लुक एट द सिचुएशंस कि कहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैन बी देयर। ओके, सो 20 क्लॉज 1 आपको दो चीजों से प्रोटेक्ट करता है। वन, कि आपने जिस टाइम पे ऑफेंस किया है, आपने जिस टाइम पे एक्ट किया है, उस टाइम पे दैट शुड बी एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। ओके, ओनली देन यू कैन बी कन्विक्टेड फॉर इट। सेकेंडली, अबाउट द पेनल्टी, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन यू। ओके, सो व्हाट इट बेसिकली सेज इज कि आपके ऊपर ग्रेटर पेनल्टी नहीं लग सकती, ठीक है। सो व्हेन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, एट दैट टाइम जो पेनल्टी थी that will apply to you, ठीक है। If subsequently by an amendment that penalty is increased, then that will not apply in your case. Okay, तो ये दो basic protections are offered under 20 clause 1 of the act. So बहुत basic protection है, but very important because it determines कि so essentially for anything to be an offense you should be aware of it, right? So that you can adequately prepare your conduct as to how you are going to conduct yourself. Because if at any given point in time what you are doing is not an offense but it is later on declared to be an offense, then in that case you cannot be charged under it, right? So this also comes from the very basic idea ki you should know the law as it applies to you on that given date, right? You cannot possibly predict how the law will change in future, and this is why you cannot be made liable under it. So that is 20 clause 1, which deals with ex post facto laws. Okay. Now we come to 20 clause 2. 20 clause 2, again very simple. It says no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Okay, so this basically grants you protection against double jeopardy कि आपको एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। So please understand कि not only does it prohibit punishment for the same offense twice, but it also prohibits the prosecution of it, ठीक है। So you cannot be prosecuted also for the same offense more than once. Okay. Third is no person accused of any offense, ये important है, keyword है, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Okay, तो इसको बोलते हैं principle against self incrimination, that if somebody is an accused, ठीक है, please remember that being an accused in a crime is important here, ठीक है। If for example if a person is only a witness and if he is being investigated or being asked questions by the police officer, then they will not be afforded the protection of 20 clause 3. Only a person who is accused of an offense can claim this protection. This protection is very simple. It simply says that you cannot be compelled to do anything that will make you give a testimony against yourself. Okay, because every person has a right of self preservation, ठीक है। तो लॉ ये मानती है कि आपके पास राइट है खुद को डिफेंड करने का, यू हैव द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, एंड दैट इज व्हाई द लॉ कैन नॉट फोर्स यू टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ, ठीक है। इसके ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस तो नहीं बट देयर इज सम जूरिस्प्रूडेंस बिकॉज ऑफ व्हिच you know that for example a person's DNA can be collected, their blood samples, their semen samples, all of that can be collected, right? So how is that possible if we are saying that a person cannot be compelled to be a witness against themselves, okay? So we will see what jurisprudence has been evolved with respect to this. Okay, so I hope that article 20 is clear to you, the Bare Act, because now we are going to come to some additional theory parts of it. Okay, ठीक है। So this we have already covered कि जो article 20 का protection है that is available to all persons, ठीक है। All persons will include artificial persons as well as natural persons. Okay, article 20 का protection is based on these three concepts. 20 clause 1 deals with ex post facto laws, 20 clause 2 deals with double jeopardy, and 20 clause 3 deals with self incrimination, ठीक है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज
किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। मतलब let's say there's a person X, he has committed an offense on 1st August 2022, ठीक है। तो उसके टाइम पे लेट्स से जो भी लॉ था दैट एग्जिस्टेड, एंड लेटर ऑन 3rd August द पार्लियामेंट इनैक्टेड एन अमेंडमेंट टू दैट लॉ, ठीक है। मान लीजिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ जाता है, तो ये जो अमेंडमेंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मान रहे हैं, बिकॉज इस केस में द ऑफेंस हैपेंड ऑन 1st August एंड वी आर सेइंग कि इफ देयर इज एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द लॉ, then how will that subsequent change impact this person X, and how will it impact his liability under the law, okay। तो सबसे पहले तो लेट्स सी कि किस किस टाइप के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो ऐसा लॉ हो सकता है विच में डिक्लेयर सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जाम्पल somebody did some committed an act on 1st August, लेकिन उस डेट पे जो एक्ट था वो क्राइम नहीं था एज पर द लॉ, ठीक है। that particular act was not an offense under any given law. So if any law for the first time makes this act or omission as an offense, that could be the first kind of ex post facto law, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखोगे जब हम केसेस पे आएंगे, जहां पे फॉर एग्जाम्पल करप्शन के केसेस थे कई सारे, कि जब करप्शन के चार्जेस लगाए उस टाइम पे दैट पर्टिकुलर एक्ट वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। इट वाज लेटर ऑन डिक्लेयर्ड टू बी एन ऑफेंस, तो इन दैट केस दोज पर्संस वर नॉट प्रोसिक्यूटेड अंडर द amended law, okay। So that could be the first kind of ex post facto law where it is declared as an offense for the first time, okay। Second could be with respect to penalty, ठीक है। सब्सिक्वेंट लॉ से पेनल्टी कुड बी इनहेंस्ड, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी रेप लॉज हैं उसमें 2013 में काफी चेंजेस हुए जहां पे पेनल्टीज इनहेंस हुई, ठीक है। वहां पे पेनल्टी इनहेंस भी हुई थी, एंड सम एक्ट्स वर क्रिएटेड आल्सो एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, स्पेशली इन द 2013 वाला अमेंडमेंट टू आईपीसी। देन लेटर ऑन इन 2018 अमेंडमेंट मोस्टली वहां पे पनिशमेंट्स एनहांस हुए थे, राइट। सो दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वेयर द पेनल्टी और द पनिशमेंट हैज बीन इनहांस्ड, ठीक है। थर्ड टाइप कुछ कुड बी कि द लॉ में प्रिस्क्राइब अ न्यू और अ डिफरेंट प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। कि यहाँ पे वो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऑफेंस इज ऑलरेडी देयर, neither are they changing the penalty for it, but what they are doing is they are simply providing a different procedure for it, कि वो ट्राई कैसे होगा, उसका प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। तो जो 20 clause 1 का प्रोटेक्शन है कि nobody will be convicted except for violation of law, they cannot be subjected to a greater penalty, okay। तो वो जो प्रोटेक्शन है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर दीज टू काइंड ऑफ लॉज, ओके। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ लॉ, ठीक है। तो अगर कोई लॉ आता है जो सीआरपीसी में प्रोसीजर थोड़ा चेंज कर देता है फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, तो ऐसे केस में एन अक्यूज्ड पर्सन cannot say that they will only be they can only be tried by the previous procedure, ठीक है। तो procedural उसकी guarantee 20 clause 1 does not provide, okay। So procedure can definitely be changed. Ma'am, can you repeat the last point? Yeah, sure. See, we saw there could be 3 kinds of ex post facto law, ठीक है। ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड काइंड है जहां पे प्रोसीजर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार ऑफेंस डिक्लेयर हो रहा है कि कोई एक्ट है ये अब ऑफेंस होगा, दिस इज नाउ एन पनिशेबल ऑफेंस, इट्स बीइंग डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड केस में द पेनल्टी इज बीइंग चेंज्ड, ओके, इट इज बीइंग एनहांस्ड। थर्ड केस में ओनली द प्रोसीजर इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आईपीसी में आपके ऑफेंसेस दिए हुए हैं, राइट। आईपीसी और भी बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जहां पे
ऑफेंसेस आर डिस्क्राइब कि कोई क्या ऑफेंस होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, लेट्स से, ठीक है, इट इज बीन डिफाइंड इन आई थिंक 315 या 316 होगा, जो भी है, ठीक है. सो इट इज डिफाइंड इन आईपीसी, बट इस ऑफेंस का, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is accused of cheating, then they are punished as per the provisions of CRPC, right? The procedure is given in CRPC कि कैसे ऑफेंसेस ट्राई होंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसके बाद कॉग्निजेंस कौन लेगा, उसके बाद कौन से कोर्ट में ट्रायल होगा, ठीक है, उस ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, ऑल ऑफ दैट इज गिवन इन CRPC. So the third kind of change, that is the third kind of ex post facto law, could be which prescribes a new or a different procedure, ठीक है. तो अगर ये जो प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर में कोई चेंज किया जाए कि ये ऑफेंस ट्राई कैसे होगा या ये ऑफेंस प्रोसिक्यूट कैसे होगा, तो दैट विल फॉल इन द थर्ड कैटेगरी. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 20 क्लॉज 1 का जो प्रोटेक्शन है दैट डज नॉट अप्लाई टू दिस, ठीक है. अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है, कोई अमेंडमेंट लेके आती है एंड द प्रोसीजर का चेंज, ठीक है, इफ दे चेंज द प्रोसीजर, लेट्स से फॉर समन्स केसेस का जो करंट प्रोसीजर है सीआरपीसी में, अगर वो उसको चेंज करके कोई और प्रोसीजर ले आए या उसी में कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, so then an accused person cannot say that they can only be tried by the previous procedure. Okay, I hope it's clear. It's Yes. only about the procedural laws. It does not really talk about the substantive liability of a person. Okay, so basically procedural uniformity की कोई guarantee article 20 clause 1 does not give. All right. Okay, so as I said, protection of article 20 clause 1 is available only in the first two categories, यानी कि जब या तो कोई एक्ट ऑफेंस पहली बार बन रहा है या फिर किसी ऑफेंस की पेनल्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. सिर्फ इन दो केसेस में 20 clause 1 gives the protection to the accused person. Procedural changes are not protected by 20 clause 1, ठीक है. तो प्रोसीजर mid of the trial में भी चेंज हो सकता है, ठीक है. That will not impact the fair trial rights of the accused. So 20 clause 1 incorporates the understanding that penal statutes will not have retrospective effect, ठीक है. इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि penal statutes की retrospectivity नहीं होनी चाहिए, because when the offense is committed, it is that date which should determine what law that person will be subject to, ठीक है. Okay. All right. So there are two maxims also which you should know about. First one says that a person should not be made to suffer penalty except for a clear breach of existing law, and law should look forward and not backwards. Okay. Kapil is saying there's a concept called vested rights. For example, a law that takes away the right to appeal should be applied. Definitely, Kapil, that is a matter of interpretation. You're absolutely right. But again, the courts determine कि whether there is any vested right or not. ठीक है, क्योंकि right to appeal in essence is a statutory right only. Nobody can claim it as a matter of any other kind of right except when it is provided under a statute. ठीक है. So yeah, ideally अगर आप interpretation of statutes भी पढ़ोगे तो criminal laws को generally prospectively ही apply करते हैं, ठीक है. But again, as I said, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है. Criminal laws can also have retrospective application in terms of the procedure. Okay, but yeah, by a good thumb rule, criminal laws are actually applied prospectively only. Okay, now we come to 2-3 important cases. First case is Om Prakash versus State of UP. ठीक है, Om Prakash versus State of UP is a classic example of the first category of ex post facto laws that we saw. ठीक है, तो आईपीसी में 1948 में ऑफरिंग ब्राइब वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है. इट वाज लेटर ऑन एडेड बाय अ 1952 अमेंडमेंट. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि द अक्यूज्ड मिस्टर ओम प्रकाश कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर दिस न्यू अमेंडेड सेक्शन ऑफ 165A आईपीसी फॉर ऑफरिंग ब्राइब इन द ईयर 1948, ठीक है, क्योंकि 1948 में दिस वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. ओके,
It was later on added. तो वो 1948 के एक्ट के लिए इस पर्टिकुलर लॉ से पनिश नहीं हो सकते. Okay, that is the first part of ex post facto law anyway, that you cannot be convicted for something, except for a clear violation of a law. 1948 में, since that was not the law, that is why the accused cannot be punished under it. Second case is Lily Thomas versus Union of India. Important है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कहा था कि mere interpretation of provision does not create any new offense. ठीक है, तो how a provision is interpreted, that is a matter of judicial wisdom, and that does not really create any new offense. ठीक है, इस केस में actually issue ये था, I think, कि it was about bigamy. So Lily Thomas, basically the problem was that there was this person X who was a Hindu, and then later on he converted to Islam. Okay, so Mr. X already had a Hindu wife, so without divorcing his Hindu wife, he converted to Islam and got married to Y. Okay, so now the issue was whether Mr. X can be convicted for bigamy or not. Okay, उनका defense ये था कि under Islamic law polygamy is permitted, so if he takes on a second wife also, as per the Muslim personal law, it is valid. Okay, तो कोर्ट ने इस केस में कहा था कि that is not the correct interpretation of law, because for bigamy provisions under IPC to be invoked, this is a sufficient cause, because you already had a living wife. Without divorcing her, if you are converting to some other religion and marrying again, it would still attract the provisions of bigamy under IPC. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट इंटरप्रेटेड सेक्शन 494 आईपीसी की हाउ विल द बाइगेमी प्रोविजंस बी एप्लीकेबल. तो इस केस में इसलिए कोर्ट ने कहा था कि mere interpretation of provision of law does not create any new offense. ठीक है, so it will not attract article 20 clause 1. okay, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ये इंटरप्रेट करके कोई नया ऑफेंस नहीं कर रही है. इट वाज ऑलवेज एन ऑफेंस. ठीक है, it is only that the court has clarified it in this case that this is a clear case of bigamy. Okay, now we come to the sentencing part of it. ठीक है, कि हमने देखा कि nobody can be subject to a greater penalty. ठीक है, अगर आपने अच्छे से 20 clause 1 पढ़ा हो तो वहां पे उन्होंने बात की है greater penalty की. तो किसी भी इंसान पे ग्रेटर पेनल्टी नहीं लग सकती है. ठीक है, मतलब जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस दिन जो पेनल्टी है उससे ज्यादा पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड. ओके, बट क्या उससे कम पेनल्टी लग सकती है? दैट इज द आंसर टू दैट इज यस. ओके, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है ना कि अमेंडमेंट से हमेशा पेनल्टी इंक्रीज ही होगी. व्हाट इफ द पेनल्टी इज एक्चुअली डिक्रीज लेटर ऑन, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कोर्ट ने कहा था कि penalty under the Prevention of Corruption Act was increased by a subsequent amendment, and court held that enhanced penalty will not apply on the accused company. ठीक है, सतवंत सिंह के केस में they basically clarified कि enhancement of penalty retrospectively is prohibited. However, a subsequent law may provide for a minimum fine where the law does not prescribe it. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि this will not violate 20 clause 1. ठीक है, सतवंत सिंह के केस में what they were saying was कि for example अगर कोई भी offense है let's say under IPC and it says that the fine for any offense could be 5,000 rupees, up to 5,000 rupees. ठीक है, up to. तो सतवंत सिंह के केस में कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, फाइन अगर कहीं पे दिया हुआ है कि इट इज अप टू दिस मच अमाउंट, बट कोई मिनिमम अमाउंट इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो अगर लेटर ऑन इफ बाय एनी अमेंडमेंट एनी मिनिमम अमाउंट इज प्रिस्क्राइब टू दिस, ठीक है, मान लीजिए इसी लॉ में वो बोल दें कि ठीक है द फाइन कुड बी अप टू 5,000 रुपीज बट अ मिनिमम ऑफ 1,000 रुपीज. ठीक है, तो दैट विल नॉट फॉल अंडर ex post facto laws. ठीक है, मतलब हम इसको नहीं मानेंगे कि this has enhanced the penalty, okay, or that it is prescribing now a greater penalty. So that was Satwant Singh's interpretation कि a subsequent law may provide for a minimum fine where it is not prescribed already. Okay,
So that will also not violate Article 20, Clause 1. Okay. So Maruram ka case is another good example क्योंकि यहाँ पे 433A was added in CRPC, which basically talks about कि when can sentences be commuted. ठीक है? तो उसमें basically उन्होंने कहा था कि 14 years के पहले it cannot be commuted. So the court said कि that is not violative of Article 20 Clause 1. Okay. Now we come to the issue of beneficial ex post facto laws. कि अगर कोई subsequent law है जो penalty enhance करने की जगह reduce कर रहा है, तो will that benefit the accused person? Okay, so the answer is yes, क्योंकि 20 clause 1 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि lower penalty cannot be imposed. Okay, 20 clause 1 only prohibits imposition of enhanced penalty, but it does not bar any reduction in the punishment. ठीक है, तो बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कोर्ट ने कहा था कि any ex post facto law which mollifies the rigor of criminal law will not violate 20 clause 1. Correct? फिर ऑफ कोर्स हमने जैसा कि देखा कि 20 आर्टिकल 20 पूरा ही इनफैक्ट इट ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल केसेस. ओके, इट डज नॉट अप्लाई टू सिविल केसेस. सो इफ any civil liability is imposed retrospectively, that will not be barred. ठीक है, जैसे हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में the liability to pay compensation was imposed retrospectively. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा था कि liability to pay compensation will not violate 20 clause 1 because it is a civil liability. Okay? So it does not receive the protection of 20 clause 1. Now we come to the second clause, that is double jeopardy. ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि nobody should be punished twice for the same offense. ठीक है, एक बार if the person has been punished, if the person has been prosecuted and punished for it, then the law will not punish that same person again for the same thing. ठीक है, तो ये तो of course this is something which you find in all laws, be it civil or criminal, कि generally if a person has been tried once and convicted once or acquitted once, then they should not be forced to go through the same process again. Okay, so no one shall be put in jeopardy twice for the same offense. It is based on the legal maxim nemo debet vis vexere, okay, which means that a man must not be put twice in peril for the same offense. Okay. It is similar to the English doctrine of autrefois convict, which is also embodied in section 300 of CRPC. ठीक है, अब क्या बेसिक एसेंशियल्स हैं फॉर 20 क्लॉज 2 टू बी मेट. ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज हर लॉ के डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे सीपीसी में अगर आप देखोगे रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, दैट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट देन दिस. ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो पर्सन शुड बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस and person must have been prosecuted before a court or a judicial tribunal. ठीक है, मतलब किसी judicial body के सामने the person should have been prosecuted. Third condition is that the person should have been punished. ठीक है, if the person has not been punished, then he cannot claim the protection of 20 clause 2. क्योंकि 20 clause 2 में दो words उन्होंने use किए हैं, prosecuted and punished. ठीक है, मतलब दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना is required for 20 clause 2 to apply. Okay, so the person must have been punished after his or her conviction. If the person is acquitted of the offense, 20 clause 2 is not available. Okay, so these are the basic conditions. If these have been met, then the person cannot be prosecuted again for the same offense. ठीक है, बैजनाथ वर्सेस स्टेट के केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर पहला प्रोसिक्यूशन वाज अ नलिटी, ठीक है, मतलब इट नाइदर लेड टू अ कन्विक्शन नॉर लेड टू अ अक्विटल, देन आल्सो 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन विल नॉट बी अवेलेबल. ठीक है, अब जो सेकंड टाइम पे प्रोसिक्यूशन है जिसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दैट सेकंड प्रोसिक्यूशन शुड आल्सो बी बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल. ठीक है, हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, एंड लेट्स से इफ ही कमिटेड सम ऑफेंस, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑफेंस ही कमिटेड,
Now he may be punished under, let's say, IPC before a court of law for this particular offense. ठीक है? And at the same time, either before or after his conviction, he may also be subject to administrative inquiry, है ना, departmental inquiries जो होती हैं. तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे 20 clause 2 is to be invoked, okay? Because this is not a case of judicial tribunal or court trying the matter. This is a departmental inquiry that the person may anyway be subject to. ठीक है? तो 20 clause 2 का प्रोटेक्शन सिर्फ कोर्ट्स या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के सामने ही अवेलेबल होता है, ओनली इफ द प्रोसिक्यूशन हैपेंस बिफोर देम. ठीक है? So for example, अगर if a person was subject to a departmental inquiry and then later on he was also prosecuted in a court of law for violating any provision of IPC, he cannot claim before a court of law कि he has already been subject to departmental inquiry, so he cannot be, prosecuted again. ठीक है? तो ऐसा he cannot claim because the previous prosecution has to be before a court or judicial tribunal. And the second prosecution should also be before a judicial body only. ठीक है? तो उसी केस में 20 clause 2 is actually available. ठीक है? हाँ, अब हम आते हैं द टर्म ऑफेंस पे कि ऑफेंस क्या होता है. ठीक है? सो द ऑफेंस मस्ट बी सेम इन बोथ द प्रोसीडिंग्स where one and the same act constitutes two different offenses. Punishment for one does not bar the punishment for the other offense. ठीक है? जैसे आपको पता होगा, अगर आपने कभी भी क्रिमिनल चार्जशीट देखी है, तो you will know that same set of offenses, same set of acts may lead to different offenses. ठीक है? हो सकता है किसी ऑफेंस में कुछ इंग्रेडिएंट ज्यादा है, कुछ इंग्रेडिएंट कम है, तो even one act that has been committed may lead to different offenses being implicated in the matter. ठीक है? तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है that is only available against the same offense. ठीक है? अगर कोई और offense भी वहां पे अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन that was something which was not prosecuted in the first time, then the punishment for one does not bar the punishment for the other offense. ठीक है? तो आप दूसरे ऑफेंस के लिए अभी भी लायबल हो सकते हो even after you have served your punishment. ठीक है? So test is not identity of allegations, but it is identity of ingredients. ठीक है? So same offense try नहीं हो सकते हैं, but different offenses can definitely be tried again in a second prosecution. ठीक है? Now we come to the issue of self-incrimination. ठीक है? कि nobody, no person can be compelled to be a witness against himself. ठीक है? कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कंपेल्ड, कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. अगर कोई विलिंगली एविडेंस देना चाहता है तो दे विल नॉट बी प्रिवेंटेड टू डू सो. ओके, सो 20 clause 3 only talks about any forced testimony. ठीक है? It is based on the simple maxim that no man is bound to accuse himself. ठीक है? This is also very similar to the American principle that is given in the Fifth Amendment, which is also known as the Miranda principle. ठीक है? इसको मिरांडा प्रिंसिपल इसीलिए बोलते हैं because it was laid down as a law in the case of Miranda versus Arizona, जहाँ पे कोर्ट ने इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था कि what is right against self incrimination. ठीक है? तो आपने वो देखा भी होगा, if you would have watched American TV shows or movies, then you would have seen that when they are arresting somebody, they basically give like a disclaimer, that you're not bound to say anything and anything you say will be used against you, blah blah blah. Okay? So that is basically your Miranda principle, which gives every person the right not to be compelled to give evidence against themselves. Okay? So it acts against compulsion basically. Okay? कि आपको कोई compel नहीं कर सकता. If you want to willingly give that, then of course 20 clause 3 will not be a hindrance to it. ठीक है? अब इसके एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले तो कि पर्सन शुड बी अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस. ठीक है? इफ अ पर्सन इज म्योरली a suspect at this point, ठीक है, they are not accused formally in that particular case, so they cannot ask for the protection of 20 clause 3. ठीक है? 20 clause 3 is protection against compulsion to be a witness.
लेकिन इसमें भी there's a jurisprudence that the courts have evolved. ठीक है, courts have evolved something called testimonial compulsion. ठीक है, तो basically they have distinguished between testimonial compulsion and other kinds of compulsion. ठीक है, तो उनका ऐसा मानना है कि आपको कोई टेस्टिमोनियल कंपल्शन के लिए फोर्स नहीं कर सकता. ठीक है, मतलब टेस्टिमोनियल कंपल्शन कैन नॉट बी देयर, अदर कंपल्शंस कैन बी इम्पोज्ड एंड दे विल नॉट वायलेट 20 क्लॉज 3. इसका क्या मतलब है? ठीक है, जैसे आपको पता है कि इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड, देन their blood sample can be collected, their signatures, their handwriting samples, their DNA, their semen samples if it's a rape case. Okay, all of those can be legally collected, right? आपने सीआरपीसी पढ़ा है, उसमें सारे प्रोविजंस हैं कि अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो why does that not amount to violation of 20 clause 3? ठीक है, क्योंकि उसको कोर्ट का मानना है कि दैट डज नॉट अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन. ठीक है, कि आपको टेस्टिमनी देने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है. ठीक है, दिस इज जस्ट एविडेंस बीइंग कलेक्टेड, दिस डज नॉट अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन. सो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटिकालू ओगर के केस में कोर्ट ने इसी पॉइंट को बोला था कि डायरेक्टिंग द अक्यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट or to give a signature or handwriting does not amount to testimonial compulsion. ठीक है, on the other hand, for example, if you're being subject to a narco analysis, ठीक है, तो that will amount to testimonial compulsion, क्योंकि आप वहां पे कुछ चीजें एडमिट करोगे, right? Like there'll be questions that will be asked to you and you will be giving answers to them and those answers can be used against you. ठीक है, so they are not simply submission of evidence, but they will amount to forcing you to give a testimony against yourself. ठीक है, तो इसीलिए नार्को टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो आपकी विल के अगेंस्ट नहीं किए जा सकते. ओके, सो नार्को टेस्ट कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड if the accused person consents to it. ठीक है, if the person does not consent, then it cannot be administered. Okay, so that is something which will amount to testimonial compulsion. ठीक है, 20 clause 3 का जो protection है, it does not extend to search and seizure also. For example, your house can be searched, your person can be searched, whatever is searched, and that evidence can be seized and it can be used against you. ठीक है, so that will also not amount to compelling you to give testimony against yourself under Article 20 clause 3. Okay. Goes without saying कि protection of 23 is only available to accused in a criminal case and not to witnesses or to civil proceedings. ठीक है, ये ना तो witnesses पे apply होता है ना criminal case, और civil proceedings पे तो ये बिल्कुल भी apply नहीं होता है. Okay, of course सबसे important case है इसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का. इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं they will amount to testimonial compulsion and they will violate Article 20 clause 3. ठीक है, तो if narco analysis test has to be done to an individual, then it cannot be done without their permission. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि DNA profiling of the accused is not a testimonial act and that is why it is not protected by 20 clause 3. ठीक है, तो ऑल इन ऑल जहां पे भी किसी पर्सन की टेस्टिमनी इन्वॉल्व हो, he will admit to something or he will elaborate upon how he committed the act or offense, or basically giving any kind of information voluntarily that is within the knowledge of the accused person. ठीक है, forcing him to do that will amount to testimonial compulsion. ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जैसे आपका डीएनए कलेक्ट करना, आपके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करना, आपके हैंडराइटिंग सैंपल लेना, आपके ब्लड सैंपल्स लेना, ये सारी चीजें does not come under testimonial compulsion. So that is why they are not protected by 20 clause 3. That is basically your Article 20 and I hope it's clear to you. If anybody has any doubts, you can ask. Okay. All right, now we will move forward to Article 21, 21A and 22. ठीक है,
आज हम बस इसका बैराक पढ़ेंगे and then in the next class we'll start with the theory part of Article 21. Article 21 is very vast, but at the same time, from a competitive exam point of view, there's only so many landmark cases that you can remember. Okay, so Article 21 is huge, but for a competitive exam, you don't really have to go into the details of all the case laws that have been held. So you can focus on just a few important ones and a few important implied rights that have been laid down under Article 21, and I think you'll be good to go. Okay, बाकी Article 21 bare act में तो कुछ भी नहीं है, it's hardly one line, right? So Article 21 offers one of the best protection. It is one of the most important fundamental rights because it lays down protection of life and personal liberty. ठीक है? It very clearly says that no person, ठीक है? Obviously ये हर किसी के पास है. It obviously cannot be made available only to citizens, right? See, when you look at the nature of any fundamental right, you can anyway deduce कि who will it be applicable to. ठीक है? तो अगर आपको generally नहीं भी पता, if you don't remember it from the Bare Act, you can still very reasonably predict as to who this fundamental right applies to. Correct? So Article 21 applies to all persons. It says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Okay? Every word is important in this. वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते. ठीक है? क्या कभी नहीं ले सकते? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है? एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके, तो आपको भी पता है कि पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एन अक्यूज्ड कैन बी sent to jail and will be denied bail, right? So in essence, his personal liberty indeed is being taken away, right? Like if you're putting somebody in jail, then their personal liberty is being taken away from them. So that does not violate Article 21, because Article 21 carves out an exception कि if you are doing this according to the procedure that has been established by law, then this is permissible. ठीक है? क्योंकि इंडिया में तो डेथ पेनल्टी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है. So by law, you can even take away somebody's life. So that also does not violate Article 21, because as long as the procedure by which it is being done is fair, not arbitrary, then in that case, such a thing can be done. Okay. So Article 21 is very important. Can you guys tell me this phrase, from where is this taken? Procedure established by law. We have covered this in the earlier sessions. Which country have we taken this phrase from? Please type it out, don't say it, and type it out in a direct message, because if you answer, I want others also to answer it. Okay, ठीक है. Due process of law is taken from the US. Where is procedure established by law taken from? ठीक है. हाँ, ये distinction भी काफी important था कि basically मेनका गांधी के केस में कोर्ट क्लैरिफाइड कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस में यूज होता है टर्म, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ठीक है. कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में एक्चुअली डेल्ट विद दिस एंड दे डिड टॉक अबाउट कि हाउ आर दीस टू टर्म्स डिफरेंट एंड वेदर देयर कंटेंट इज आल्सो डिफरेंट और नॉट. So yeah, this was taken from the Japanese constitution. I think 2 of you have answered it correctly. ठीक है. Please go through these very basic things. ये हमने I think first class में cover किया था, because these questions are very easy and they are very easily scoring. So because they're like very elementary at this stage, right? So okay, so that is basically your Article 21. अब Article 21 Bare Act में तो बहुत ही छोटा सा है, but then there are a few very very important case laws and very important implied fundamental rights that have been derived from Article 21. ठीक है? Latest being, of course, your right to privacy, which was held to be a fundamental right under Article 21 in the K.S. Puttaswamy case. ठीक है? तो Article 21 की थ्योरी पे हम बाद में आएंगे. पहले let's cover 21A and 22 from the Bare Act. Okay? 21A बात करता है right to education की. ठीक है? As you can see, this was added later on by an amendment, that is the 86th Amendment Act 2002. ऐसा नहीं है कि इसके पहले तक right to education was not a fundamental right. ठीक है?
बहुत सारे केसेस थे, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, जहां पे कोर्ट ने एनीवे बोला था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राइट टू एजुकेशन 2002 में फंडामेंटल राइट बना, इट वाज ऑलवेज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बट लेटर ऑन सेपरेटली इट हैज बीन एडेड एज 21A। ठीक है, लेकिन अगर आप 21A को पढ़ोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली वर्डेड है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट से काफी डिफरेंटली वर्डेड है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट की एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की बात करता है। ठीक है, आप बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट पढ़ो, वो जनरली नेगेटिवली स्टार्ट होते हैं कि नो पर्सन विल बी कंपेल्ड टू डू दिस, नो पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू दिस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, या फिर वो किसी इंडिविजुअल की राइट की बात कर रहे होते हैं। But 21A is very interesting because it talks about the obligation of the state. ठीक है, क्या obligation? That the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. ठीक है, फिर of course parliament also enacted the right to education act, and so this particular law has already been enacted now. ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, और जब आप डीपीएसपीस पढ़ोगे तो आप वहां पे भी देखोगे कि 86th अमेंडमेंट मेड सम इंपॉर्टेंट चेंजेस with respect to education matters and DPSPs also. ठीक है, क्योंकि पहले this was a directive principle of state policy कि ages 6 to 14 years के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए, पर अब now that it has been made a fundamental right, तो वो वाले DPSP में they have made a few changes with respect to the age group. Okay, so we'll see that when we come to it. Now let's talk about Article 22, which is extremely important and extremely controversial. ठीक है, not 22 in general, but 22 in so far as it deals with the concept of preventive detention. ठीक है, अब Article 22 is another safeguard with respect to criminal cases. ठीक है, हमने Article 20 में basic safeguard देखा कि protection in respect of conviction for offenses. 21 also of course talks about protection for criminal offenses also, because it guarantees you life and personal liberty, except when there's a procedure which clearly provides for taking these things away. Okay, Article 22 is another very important safeguard with respect to criminal cases. ठीक है, तो 22(1) and 22(2) they basically talk about your general protection. ठीक है, 22(3) बात करता है एक्सेप्शंस की, कि ये जो दो जनरल प्रोटेक्शन हम देख रहे हैं ये किन किन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद के जो सब क्लॉजेस हैं 22(4) to 22(7) वो बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे there's an asterisk है ना, तो this is something which has been changed by the 44th amendment. ठीक है, तो आर्टिकल 22 में क्लॉजेस 4 to 7 में a lot of important changes have happened by the 44th amendment. लेकिन the interesting part is कि ये जो 44th amendment का part है ये अभी तक notify नहीं हुआ है, मतलब कि the central government has not given a date of enforcement कि ये फोर्स में कब आएगा। ठीक है, चेंजेस तो उन्होंने कर दिए बाय द 44th अमेंडमेंट, लेकिन उनको अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया है, मतलब they still don't apply. Only when the central government will give an enforcement date, only from that date onwards the changes will apply. ठीक है, तो अभी मतलब firstly we will just look at the law as is. ठीक है, मतलब अभी हम जो पोजीशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 44th अमेंडमेंट के पहले वाली। ठीक है, एक बार वी आर डन विद द थ्योरी एंड एवरीथिंग तो हम ब्रीफली ये भी देख लेंगे कि 44th अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां पे कुछ और बेटर सेफगार्ड्स लगाए हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्बिट्ररी ना हो या ज्यादा टाइम के लिए ना हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स हैव बीन पुट by the 44th amendment, but the sad part is that it has still not been implemented. ठीक है, yes Kapil, exactly, it's been almost 40 years, right? Like can you imagine in 1978 was when the 44th amendment was actually enacted, right? So yeah, in fact kai bari there have been some case laws also jahan pe parties have went to the court saying that central government should be
asked to enforce it. But naturally, the courts have refused because the courts have said that this is a matter for the executive to decide, and they cannot compel or direct the executive to give an enforcement date. Okay, so yeah, interestingly, it has been over 40 years, but there's no sign as to when this will actually be implemented. Okay, so anyway, we will deal with firstly the law as is, and then later on we will also see कि changes क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि काफी interesting और important changes हैं जो आपको पता होने चाहिए. Okay, so now let's come to article 22. ठीक है, article 22 बात करता है protection against arrest and detention in certain cases. ठीक है, 22(1) बोलता है no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक है, वेरी बेसिक राइट्स. और आप देखोगे जो सीआरपीसी में आपके प्रोविजंस हैं अरेस्ट से रिलेटेड, आई थिंक सेक्शंस 40, 41, वहां पे बहुत सारे नए चेंजेस भी हुए थे आफ्टर द डीके बसु केस, राइट. तो वहां पे भी ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना. क्या बेसिक सेफगार्ड्स हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, इफ यू आर डिटेनिंग समबडी इन कस्टडी, ठीक है, तो क्या बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम कि वो क्यों अरेस्ट हुए, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर देयर अरेस्ट, एंड सेकेंडली they cannot be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of their choice. ठीक है, so a person who is arrested has these rights. He has a right to be informed of what are the grounds of his arrest. He has a right to legal consultation, not only to legal consultation but to be defended also by a legal practitioner of their choice. ठीक है, अब of course हम बाकी जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि you have the right to consult, but that doesn't mean ki the legal practitioner will be available to you at all times when you are in custody. Okay, there could be restrictions on that. Secondly, it is all of course subject to whether you have the capacity to engage a legal practitioner or not. ठीक है, इसीलिए हम जब DPSPs पे आएंगे तो हम देखेंगे कि one of the DPSPs says that there has to be free legal aid, right, कि state की responsibility है free legal aid provide करना. ठीक है, so all those things are also have to be kept in mind when you're reading these very basic rights against arrest. So that is article 22(1). It is available to all persons, be it a citizen or a non-citizen, it applies to everybody. 22(2) again talks about another important protection. It talks about the time limit. ठीक है, ये भी आपके CRPC में दिया हुआ, I think section 57 है if I'm not wrong, and I think there's one more. ठीक है, तो 22(2) बोलता है कि every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the set period without the authority of the magistrate. ठीक है, इस बार का अगर आप CLAT का पेपर देखोगे तो उसमें यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं. It was actually a mix of questions from CRPC and article 22, जहाँ पे वो आपसे यही सब बेसिक्स पूछ रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला है तो फिर क्या 22(2) को कंप्लाई करना जरूरी है. ठीक है, सो द आंसर टू दैट वाज नो, है ना. दिस ओनली अप्लाइज व्हेन अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट. सो 20 मतलब एसेंशियली सी पूरा आइडिया ये है कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है या किसी को कस्टडी में लिया है तो जुडिशियल माइंड कितने देर में अप्लाई होना चाहिए. ठीक है, सी police is part of the executive, right? They are not persons who are trained in law. So if you have arrested somebody, then a judicial mind has to be applied to that situation. Judicial mind apply होने का मतलब होता है कि आपको within 24 hours you'll have to present this person before a magistrate who will apply his judicial mind, and he will decide कि whether continuation of
arrest or continuation of detention is necessary or not. ठीक है, they will see कि whether a case is made out or not सबसे पहले तो, ठीक है, कि actually कोई case है जहाँ पे arresting this person makes sense, and then they will also assess कि whether putting them in police custody will be more better or sending them to judicial custody is what is more suited in the situation. ठीक है, so all in all, to make sure that a judicial mind is applied to the arrest of a person, the safeguard is provided that if anybody is arrested, they will have to be produced before a nearest magistrate within 24 hours. ठीक है, इसमें of course travel time excluded होता है कि it will not include the time which is necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate. ठीक है, और इसके बाद का जो भी detention होगा, detention beyond this 24 hours, that will not be done without the authority of the magistrate. ठीक है, मतलब 24 hours के बाद का जो भी detention होगा, that is something which only the magistrate can decide. ठीक है, magistrate decide कर सकता है कि पुलिस कस्टडी में भेजना है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजना है. ठीक है, तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये आपके एनीवे सीआरपीसी में डिटेल में दे रखे हैं. बट the constitution makers thought that these are some very basic freedoms, है ना, very basic safeguards against arrest and detention, and that is why they have been elevated to a status of a fundamental right. ठीक है, ऐसे तो procedural law anyway deal करता है इन चीजों से, लेकिन ये rights इतने important हैं, इतने basic safeguards हैं against, you know, the arbitrary action of the police, that they have to be worded as fundamental rights. Okay, so this is 22.1 and 22.2. Shivam is saying, can you explain that warrant question again? हाँ, आप देख लेना, मुझे exactly याद नहीं है वो कैसे worded था, but उसमें I think there was one passage in which they asked you questions from CRPC on the same issue and with, you know, a mix of questions on Article 22. ठीक है, so I think उसमें ऐसा एक question था कि अगर वारंट ऑफ अरेस्ट से कोई अरेस्ट हुआ है, ठीक है, मतलब अगर किसी ऑलरेडी किसी मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट साइन किया है और उसके बाद किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो वेदर दिस पर्सन आल्सो हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स और नॉट. ठीक है, तो ऐसा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. ठीक है, आप एक बार देख लेना, द framing of the question was quite different from how I am saying it. All right. Okay. So that is 22.1 and 22.2. ठीक है, एकदम बेसिक फ्रीडम, आपको बेसिक सेफगार्ड्स देते हैं अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में. ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स सीआरपीसी में अच्छे से फिर डिटेल में दे रखे हैं कि व्हाट इज द होल प्रोसीजर फॉर इट. राइट, नाउ वी कम टू 22.3 जो बात करता है एक्सेप्शंस की, कि अब ये जो हमने दो सेफगार्ड्स देखे इतने इंपॉर्टेंट, ये कब अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इतने बेसिक सेफगार्ड्स भी किसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकते हैं. ठीक है, सो नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien or to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. ठीक है, तो अगर कोई enemy alien है, for example if India is at war with some country and that country's citizen has been arrested in India, so that person may not be given the rights of 22.1 and 22.2. ठीक है, secondly, if any person has been arrested or detained under any preventive detention law. ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस पे काफी डिबेट भी है कि why is this first of all an exception, because historically preventive detention laws have been misused. ठीक है, there are no safeguards, there are no timelines, there is no due process in preventive detention laws, and they are very legally, you know, taken away from the purview of 22.1 and 22.2. ठीक है, so that is a very interesting thought in itself as to why they are excluded from the basic protection that should be available to anybody who has been arrested. ठीक है, अब preventive detention होता क्या है, इसका बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि what could be a law providing for preventive detention. ठीक है, see, so preventive detention, as the name is very clear in itself, it is preventive in nature. You are detaining somebody to prevent something from happening, which means that an actual crime has not occurred yet. ठीक है, कोई actual crime अभी तक नहीं हुआ है, कोई offense नहीं हुआ है, but you
बिलीव दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, नॉट जस्ट एनी ऑफेंस, ऐसा नहीं कि चीटिंग, थेफ्ट, इस टाइप के छोटे मोटे ऑफेंसेस, बट ऑफेंसेस जनरली विच टारगेट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज देखो तो जनरली इसी टाइप के हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करते हैं, या फिर सच काइंड ऑफ ग्रेव थ्रेट्स टू द कम्युनिटी in itself. So such persons can be arrested even in the apprehension that they may commit an offense, okay? So this is why preventive detention laws are a very gray area, because actually nobody has committed the offense, so the level of evidence that may be available would be extremely of a lower standard, and on top of it there are very less safeguards that are available to them, ठीक है? तो अब 22(4) से लेके 22(7) बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में क्या सेफगार्ड्स लगेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में these two safeguards will not apply, right? तो फिर what will be the basic rules कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में फिर क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए, ठीक है? अब प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये अमेंडमेंट के पहले की प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यही अप्लाई होते हैं, ठीक है? तो देखा जाए तो आपके लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द अमेंडमेंट हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट, ठीक है? तो वो तो जब नोटिफाई होगा तब की बात है, बट हाँ ठीक है, हम ये पढ़ने के बाद एक बार चेंजेस भी देख लेंगे, एंड में देखेंगे व्हेन वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, ओके? ऑलराइट, सो नाउ clause 4 says no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते अनलेस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? सो जनरल रूल क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नॉट बी फॉर मोर देन 3 months अंडर एनी लॉ, ओके? बट इट कैन एक्सीड 3 months if these two conditions exist, ठीक है? पहला तो क्या कि अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड, और वो एडवाइजरी बोर्ड का आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बताएंगे, कि अगर एडवाइजरी बोर्ड बोल दे कि देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडिंग सच डिटेंशन, ठीक है? तो एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म होगा। एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होगा? एडवाइजरी बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ पर्संस who are or have been or are qualified to be appointed as judges of high court if they have reported before the expiry of this 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention, ठीक है? तो एडवाइजरी बोर्ड अगर बोल दे 3 महीने खत्म होने से पहले कि यहाँ इस केस में there is sufficient reason for extending the detention, then that can be done, ठीक है? अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें 3 months को 2 months कर दिया है, और एडवाइजरी बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी थोड़ा और स्ट्रेंथन किया है विद द जुडिशियल बॉडी। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट चेंजेस हियर, लेकिन provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by parliament under 7B, ठीक है? लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर कोई लॉ है, जैसे कि अभी आपका कौन सा यूएपीए एक्टिव है ना? यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है जो अभी भी अप्लाई होता है। तो अगर लेट्स से यूएपीए में ही लिखा हुआ है कि डिटेंशन कैन नॉट बी मोर देन 4 months, ठीक है? तो फिर एडवाइजरी बोर्ड कैन नॉट अलाउ फॉर अ डिटेंशन एक्सीडिंग दिस ड्यूरेशन, ठीक है? तो प्रोवाइजो में वो यही बोल रहे हैं कि एडवाइजरी बोर्ड उतने टाइम तक ही एक्सटेंड कर सकता है, मतलब उतने टाइम से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है जितनी आउटर लिमिट किसी लॉ में दी हुई है अंडर क्लॉज 7B, ओके? सो एसेंशियली एडवाइजरी बोर्ड हैज द पावर टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन, ठीक है? बट दे कैन नॉट डू सो over the time period which has been prescribed by a law made by the parliament itself, ठीक है? तो अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के ऑलरेडी बता दिया है कि इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, तो उस केस में एडवाइजरी बोर्ड कैन नॉट एक्सटेंड इट फर्दर, ओके? सेकंड क्या सीन है? if such person is detained in accordance with the provisions of any law made under 7A or 7B, ठीक है? 7A 7B में वो anyway बात कर रहे हैं कि 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन कब हो सकती है, ठीक है? तो 7A 7B जब हम देखेंगे तब आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके? सो ऑल इन ऑल वो क्या बोल रहे हैं
कि if a person has to be detained for more than 3 months, then how can it be done? It could either be done by the permission of advisory board, or it could be done if there is a law which has been made by the parliament under 7A or 7B. ठीक है, 7A 7B देख ही लेते हैं so that you understand it. 7 बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब. ठीक है, क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकती है? द सर्कमस्टांसेस अंडर विच and the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of the advisory board. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है जहां पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किन केसेस में या किन सर्कमस्टांसेस में डिटेंशन कैन बी मोर देन 3 months विदाउट टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, तो उन्होंने पार्लियामेंट को काफी कार्ड ब्लांश पावर दे दी है कि अगर पार्लियामेंट को चाहिए कि वो किसी को ज्यादा टाइम तक डिटेन करना चाहते हैं तो दे सिंपली हैव टू मेक अ लॉ फॉर इट. ठीक है, वो लॉ में प्रोवाइड कर सकते हैं. सेकेंड क्या है? Parliament can provide the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention and Parliament may by law provide for the procedure to be followed by the advisory board. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट मैक्सिमम पीरियड भी बता सकती है कि आप कितने टाइम तक के लिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस पीरियड कुड बी मोर देन 3 months. ठीक है, तो ऑल इन ऑल इसमें प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ पावर. ठीक है, विद एब्सोल्युटली नो सेफगार्ड्स, क्योंकि 7A में तो उन्होंने इतना तक बोल दिया कि आप अलग से केसेस भी बता सकते हो और सर्कमस्टांसेस भी बता सकते हो किन केसेस में आप 3 महीने से ज्यादा यू कैन कीप समबडी इन प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट गोइंग टू द एडवाइजरी बोर्ड. ओके, तो एक्चुअली जो 44th अमेंडमेंट है उसमें इसको डिलीट कर दिया गया है and only 7B and 7C have been retained. ठीक है, but again as I said it has not been notified yet, तो एक जो बहुत ही basic protection है that is still not being made available. Okay, तो all in all हमने ये देखा कि generally advisory board का काम ये होगा कि advisory board देखेगा कि whether there's any need for any extended preventive detention or not. ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो खुद से एक ज्यादा मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है. ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने लॉ में ही लिख दिया कि द मैक्सिमम पीरियड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज 5 months, ठीक है, तो फिर एडवाइजरी बोर्ड की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज लीगली बाय लॉ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन हैज बीन इंक्रीज्ड. ओके, सो दैट इज clause 4 which basically tells you कि how can you keep somebody in preventive detention after a period of 3 months. ठीक है, अब 22(5) बात करता है राइट्स की कि अब अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो उनके क्या बेसिक राइट्स होंगे. ठीक है, जैसे हमने जो 22(1) और 22(2) के केस में देखे. ओके, सो व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. Okay, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट द ग्राउंड्स. ठीक है, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ क्या है एज सून एज मे बी. ठीक है, as soon as maybe could be anything. Alright, तो पहला तो ये है कि they should be informed as to why this order has been made against them, and second they have to be given the opportunity of making a representation. ठीक है, अगर आपको याद हो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, you have the right to consult, you have the right to be represented by a legal practitioner. यहाँ पे you do not have such rights. Okay, the only right that you have is that you yourself can make a representation against the order. ठीक है, you do not have the right to have a lawyer for this particular representation. ठीक है, फिर 6 बोलता है nothing in clause 5 shall require the authority making any order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose. ठीक है,
अब उन्होंने कहा कि बेसिक सेफगार्ड है कि आपको बताना चाहिए कि आपको क्यों डिटेन किया गया है, राइट, लाइक ग्राउंड्स हैव टू बी डिस्क्लोज टू यू। बट क्लॉज 6 बोलता है कि अगर स्टेट को लगता है कि दीज ग्राउंड्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज दे विल गो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, देन दे मे चूज नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स, ठीक है। तो अगेन दिस मेक्स इट इवन मोर व्हाट यू कॉल स्ट्रिंजेंट, क्योंकि even having access to the facts as to why you have been detained, even that can be taken away if the state feels that it is against the public interest. Okay, so that is basically your article 22. Now you can make a decision whether any or adequate safeguards are available in matters of preventive detention or not. Okay, so the theory part of it in itself is very scary. If you look at the application of preventive detention laws, you will understand how frequently they are misused, okay, in the name of security of the state or things like that.